guys, and welcome back to my channel. It's me Joe, and as you read by the title, today's video is inspired by Deepika Padukone's Ramleela makeup look. And as Holi is coming, I'm gonna wish you all a very happy Holi in advance. Stay home, stay safe. इसलिए मैंने ये मेकअप लुक किया है just because बाहर तो कहीं जाना नहीं है, तो इसी बहाने Bollywood inspired makeup look करना चाहिए ऐसे मैंने सोचा. So this is what I've managed to create today, and I'm loving the outcome of it, and that's the reason I'm shooting the intro obviously. So this look is very simple to create and very basic because इसने एक्चुअल में कुछ किया नहीं है. पोस्ट दिस पिक्चर एंड मैं ये लुक क्रिएट किया है. सो एक्चुअल में दिस मेकअप लुक इज़ वेरी वेरी सिंपल क्योंकि इसमें सिर्फ बेसिक मेकअप है, ज़्यादा कॉन्टोरिंग नहीं है, ब्लश ज़्यादा नहीं है, हाईलाइट्स भी ज़्यादा नहीं है, लिपस्टिक भी एकदम म्यूटेड है, जस्ट आईज थोड़ा ब्राउनिश है. ओके, अ लिटिल डिस्क्लेमर, ऐसा लुक करके इतना मेकअप करके कभी कोई होली खेलने तो जाता नहीं है. ये बॉलीवुड इंस्पायर्ड मेकअप लुक है, तो ऐसे मत सोचना हम लोग इतना रेडी होके होली खेलने जाते हैं. ऐसा कभी नहीं होता है, ये सिर्फ पिक्चरों में होता है. तो yeah, this was a little disclaimer that I wanted to give you because पता नहीं कोई लोग ऐसा सोचते हैं कि इतना मेकअप करके कौन होली खेलने जाता है. So ऐसा कुछ नहीं है. This is just a Bollywood inspired makeup look and I'm planning to create such series जिसमें मैं अलग अलग सेलिब्रिटीज़ के लुक क्रिएट करके ऐसा एक सीरीज सोच रही हूँ. I don't know how much I'll be able to make it, but फिर भी I have started with it. तो ये फर्स्ट लुक है जो मैंने क्रिएट किया है for होली and I hope you like the look, and if you want to know how I achieved this look then please keep on watching. तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बाय वाइपिंग ऑफ माय फेस एंड उसके लिए आई एम यूजिंग सैवलॉन वेट वाइप्स टू जस्ट वाइप ऑफ माय फेस इफ आई हैव एनी एक्स्ट्रा डर्ट. इसके बाद आई एम यूजिंग दिस सीटाफिल मॉइस्चराइजिंग लोशन टू मॉइस्चराइज माय फेस एंड दिस इज द बेस्ट लोशन फॉर सेंसिटिव स्किन. Gently rub it all over your face, don't forget your neck. Now I'm using Plum Face Mist to just hydrate my face. Letting it sit for 2 minutes and then using a beauty blender, I will just dab it all over my face. After this, I'm using Laneige Lip Sleeping Mask. तो अभी फॉर माई फाउंडेशन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ Maybelline Fit Me फाउंडेशन इन द शेड 230 नेचुरल बफ. थोड़ा सा सिर्फ हाथ पे लेके आई जस्ट पुट डॉट्स ऑल ओवर माई फेस. फिर एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर को पानी में सोक करके आई एम जस्ट स्प्रेइंग ऑफ माई सेटिंग स्प्रे एंड उससे फिर मैं ब्लेंड करूँगी. आई एम जस्ट डैबिंग इट ऑल ओवर माई फेस एंड नॉट रबिंग इट. तुम लोग भी अगर इन केस whenever you are doing your makeup you have to just dab it on your face and not rub it all over. Now I'm using Maybelline Fit Me concealer in the shade 25 medium. I'm just using it on my under eye and any dark spots that I have on my face. Now with the help of same beauty blender, I'll just dab it and blend it well. तो बेस के लिए ना धीरे धीरे डैब करो एंड एकदम स्पीड में करने की ज़रूरत नहीं है. The more you blend your foundation and concealer, the more beautiful your base will look. And अभी इसके लिए I'm using a lighter shade of concealer to highlight the T-zone area of my face. Now to set my face, here I'm using Maybelline Fit Me Compact Powder and I'll just apply it all over my face.
So make sure whenever you're applying your foundation and powders, you must apply it on your neck as well. So now for my brows, I'm using Miss Claire eyeshadow in the shade black, and with the help of angular brush, I'll just blend it so that it looks smooth and natural. For my eyeshadow, here I'm using this dark brown shade and putting it all over my eyelid. After blending the dark brown eyeshadow, now I'm taking the same black eyeshadow and putting it on my outer crease area. And now a little bit of glitter on the lid from my inner corners to center of my lid. So now taking the same brown eyeshadow and applying it on my lower lash line. So जैसे इस लुक में दीपिका पादुकोण ने एकदम ही सिंपल एक सिंगल स्ट्रोक ऑफ काजल यूज किया है, वैसे ही मैं एक सिंगल स्ट्रोक ऑफ काजल अप्लाई कर रही हूँ. एंड फॉर माई मस्कारा हियर आई एम यूजिंग मेबलिन हाइपर कर्ल. सो दीपिका पादुकोण ने इस लुक में कोई भी फॉल्सीज अप्लाई नहीं किया है, सो इवन आई एम यूजिंग जस्ट अ मस्कारा. And now for contouring, I'm using Nykaa contour stick. With the help of brush, I'll just do little contouring क्योंकि उसने मेकअप ज़्यादा हैवी नहीं किया है. It's very light and very easy breezy, तो मैं भी वही करने वाली हूँ. ज़्यादा contouring नहीं करूँगी, बहुत ही हल्का हल्का. अब जैसे कि मेरे को contouring थोड़ा शार्प पसंद है एंड दीपिका के फीचर्स ऑलरेडी काफ़ी शार्प है, सो मैंने उसके लिए थोड़ा सा क्लीन अप कर लिया है. नाउ फॉर ब्लश आई एम यूजिंग शुगर ब्लश. बहुत ही कम ब्लश लगाना है क्योंकि ज़्यादा ब्लश उसने भी नहीं लगाया है. एंड फॉर हाइलाइटर योर आई एम यूजिंग मेबलिन मास्टर क्रोम. और बहुत ही हल्का हल्का हाईलाइट करना है. एंड फॉर माई लिपस्टिक आई एम यूजिंग शुगर लिपस्टिक. शेड नेम आई विल गिव इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. बहुत ही हल्का लिपस्टिक अप्लाई किया था उसने, और ये लिपस्टिक को मैं हैंड्स के मदद से आई विल जस्ट ब्लेंड इट. नाउ डूइंग माई हेयर विच इज़ अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट फॉर मी. तो मैंने ना हाफ पोनीटेल करके उसको थोड़ा सा ऐसा पूफ लुक देने के लिए आई एम जस्ट पिनिंग इट ऑल ओवर. तो हाफ पोनी करके पिन किया और थोड़ा सा ऊपर से ना आई एम जस्ट टेकिंग. उसने ना एकदम मेसी हेयर किया था, तो वो एक मेरे लिए इजी हो गया क्योंकि एकदम स्ट्रक्चर्ड ऐसा प्रॉपर हेयर स्टाइल नहीं था, काफ़ी मेसी था उसका हेयर स्टाइल. तो मैंने भी वही ट्राई किया है, पुटिंग अ लो बन. तो दीपिका पादुकोण ने इस लुक में एक रेड बिंदी लगाया है एंड उसके नीचे एक ब्लैक बिंदी है. एंड एक तिल का मार्क है, तो वो मैं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ काजल लगा रही हूँ. आई एम वेयरिंग माई इयररिंग्स. और नोज पिन भी पहना है दीपिका पादुकोण ने इस लुक में, तो मेरे पास एक वेरी डेंटी नोज पिन था, तो मैंने वो पहन लिया है. एंड हियर इज द फाइनल लुक. तो रामलीला मेकअप लुक है एंड विदाउट गुलाल तो पॉसिबल ही नहीं है. सो ये है गुलाल शॉट.
So I hope you enjoyed watching this video. If you like the video, don't forget to hit like, share and subscribe to my channel. Follow me on Instagram and comment down below if you like the look. And I'll see you next time. Bye.